is Buddhadev Pal. I am a student of mechanical engineering. Those students are preparing for SSC JE, RRB JE, State AE examinations. This lecture is very important for those students. In this lecture, I am discussing the previous year questions of fluid mechanics. This is the class number 31. I have already completed 30 classes. If you not watch the previous classes, please go through the playlist and वहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हो. ओके, क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 751 से. फर्स्ट क्वेश्चन, coefficient of construction is the ratio of, friends, coefficient of construction क्या होता है? Ratio of, this is the area of the jet, area of the Vena contractor by the area of the orifice. Contraction area by orifice area. देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है. ऑप्शन ए एक्चुअल वेलोसिटी, नो. ऑप्शन बी एक्चुअल डिस्चार्ज थ्रू orifice to theoretical discharge, no. Losses of the head in the orifice, head of the water available in the exit of the orifice, no. Area of the jet at the Vena contractor to the area of the orifice, yes. Option D is the correct. Next question, a liquid flows from low level Z1, okay, pressure P1 to higher level Z2, pressure P2. It can be concluded. बोल रहा है एलिवेशन डिफरेंस है, लो लेवल से हाई लेवल में प्रेशर जा रहा है. सपोज दिस इज द लो लेवल, प्रेशर इधर जा रहा है, हमारा फ्लो इधर जा रहा है. ओके, लो लेवल से हाई लेवल प्रेशर जा रहा है, फ्लूइड जा रहा है, प्रेशर बोल रहे हैं. तो एक ऐसा फ्लो होगा. फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स वायलेट, नो. सेकंड थर्मोडायनेमिक्स नहीं. Z2 इज लेस देन Z1. This is the Z1, this is the Z2. Z2 is less than Z1, no. क्वेश्चन में तो बोला है Z1 is higher level. Also pressure difference आना चाहिए. pressure 2 is less than the pressure 1. इधर higher pressure और इधर lower pressure होगा तो तब जाके pressure flow होगा. lower pressure से higher pressure. pressure always flow होता, fluid always flow होता है प्रेशर लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर. ओके, इसको हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर से फ्लो लोअर प्रेशर में ऑलवेज फ्लो होता है. सो P2 इज लेस देन P1. P1 इज द हायर प्रेशर एंड P2 इज द लोअर प्रेशर होना चाहिए फ्लूइड को फ्लो होने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The figure shows for the curves for the velocity distributions across a section for the Reynolds number equation equal to the 1000, 3000, 4000 and the 5000 curve according to a corresponding to Reynolds number. So curve A कौन सा कर्व होगा? फ्रेंड्स, ये जो कर्व है वेलोसिटी का, दिस कर्व इज फॉर द लैमिनार फ्लो. लैमिनार फ्लो में क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000 फॉर द रेनॉल्ड्स लैमिनार फ्लो. 3000 नहीं होगा, लेस देन होना चाहिए. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. 1000 इज द आंसर. देख भी सकते हो एक्सप्लेनेशन. इन द गिवन फिगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स आर शोन. द कर्व इज ए पैराबोलिक कर्व. This parabolic curve is means the laminar flow. Laminar flow Reynolds number is always less than 2000, and above the option only the 1000 is the less than the 2000. So the curve corresponding to the Reynolds number is 1000. Next question, which of the following variable area meters cannot be used with the liquids containing large number of solid particles and at high pressure condition? फ्रेंड्स, कैन नॉट बोला है, ठीक है. which following variable area meters
इन एरिया मीटर में कौन सा नहीं यूज होता है लार्ज नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स मेजर करने के लिए? रोटामीटर, टर्बाइन फ्लो मीटर, ऑरिफिस मीटर, एल्वोमीटर। ए रोटामीटर। फिर भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन सही है या गलत। देख सकते हो रोटामीटर है। तो रोटामीटर कैन नॉट बी यूज्ड लिक्विड containing large number of the solid particles at the higher pressure condition. It is device used to measuring the discharge pipeline, generally used the chemical industry. Okay, rotameter generally used in chemical industry, and orifice meter. A turbine flow meters and the elbow meter can be used liquid containing large number of the solid particles. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ द फ्लो थ्रो ओरिफिस द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा इक्वल टू 0, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द वेना कॉन्ट्रैक्टा। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ द area of the construction area divided by orifice area, so is less than 1, option D. In the turbine flow meter, the rotor movement sensed by optical pickup, photoelectric pickup, relucentancy pickup, piezoelectric pickup. फ्लो टर्बाइन फ्लो मीटर रोटामीटर मूवमेंट इज सेंस्ड बाय। इसको याद रखना क्योंकि थोड़ा हट के क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्टिकल पिकोमीटर होगा, देखते हैं फिर भी क्या ऑप्शन है। सॉरी, पीजो इलेक्ट्रिक पिकोमीटर, रॉन्ग आंसर दे दिया। ऑप्शन डी होगा पीजो इलेक्ट्रिक पिकअप। एक्सप्लेनेशन क्या है, a turbine flow meter is used for the measurement of the flowmetric total flow. The rotor movement is sensed by the piezoelectric pickup. The turbine meter is provided with a piezoelectric pickup with the detects the rotation of the its rotor, then the transforms the speed of the turbine rotor into pulses. Flow rate is proportional to the frequency of these pulses. Volume is the proportional to these pulses. Okay, so piezoelectric pickup is used for the turbine flow meter. Turbine flow meter used for the सेंस करने के लिए piezoelectric pickup यूज होता है। Next question, from the Bernoulli equation, plot of the hydraulic grid line represented in the dash along the flow. Hydraulic gradient line represented by the sum of the pressure and the potential energy. hydraulic gradient line में होगा आपका P by rho G plus Z, यानी pressure, sum of the pressure and the Z is the potential energy. Option A is the correct. sum of the pressure and the kinetic energy नहीं, sum of the potential and the kinetic नहीं, sum of the potential, pressure and the kinetic energy, this is the total hydraulic total energy gradient line. Option A is the answer. Next question, for perfect incompressible fluid flow, which is true? Reynolds equation given of P by rho G, incompressible flow, so density is constant. So क्या होता है रेनॉल्ड्स इक्वेशन, P by rho G plus B square by 2G plus Z equal to constant. For incompressible fluid, this is the true. So P by rho G यानी W specific weight, so Z plus P by W plus B square by 2G, option A is the correct. 0 नहीं, constant. Option A is the correct.
Next question. Coefficient of discharge of an orifice is always CD is always less than the CC, coefficient of construction. Okay, for the orifice, CD is like 0.64 and CC is like 0.61. Okay, so coefficient of discharge is A less than the coefficient of the construction. देख सकते हो, coefficient of discharge CD is 0.61 to 0.64, construction 0.64, and coefficient of velocity 0.97, and CD equal to CC into CV. इसको याद रखना. The discharge through small rectangular orifice. Friend, discharge क्या होगा? Small rectangular orifice Q equal to area into velocity, area into velocity. So actual discharge CD दे देता है, CD into area into velocity. Velocity क्या होगा? √2gh, √2gh. So CD into A into √2gh, option A is the correct. Sorry friends. Next question. The measurement of the flow rate in a pipe is done by the combination of the Venturi meter and manometer used. Venturi meter के साथ manometer यूज होता है. The orifice is known as the large orifice. Okay, when the head of the liquid from the center of the orifice is less than 5 times of the depth of the orifice. More than 10 नहीं, less than 10 नहीं, less than 15 नहीं, less than 5 times of the depth of the orifice. Okay, और it's greater than हो जाएगा तो this is the small orifice. Next question. The discharge through a venturi is given by the formula. Discharge through a venturi. Venturi का formula क्या है? Q equal to CV को CD को C ले लिया है, C into A1 A2 by root over A1 square minus A2 square into root over 2GH. कौन सा ऑप्शन में है देखते हैं. कोई भी ऑप्शन में नहीं है, सो नॉन ऑफ द आंसर इज द करेक्ट. देखो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर ऊपर में है, A1 माइनस A2 नहीं है, ये भी नहीं है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. कोई भी आंसर नहीं होगा. A pitot tube was inserted in a pipe to measure the velocity of water in it. If the water rise, the tube is 200 mm from the surface, the velocity of the water. Friends, velocity of the water क्या होगा? Velocity V equal to root over 2gh. Okay, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं. V into root over 2gh. So root over 2 into g 9.81 into h 200 mm है, तो मीटर में कन्वर्ट करना है. आंसर मीटर पर सेकंड है, सो 200 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करना, जो आंसर आएगा वो एक करेक्ट होगा. ओके, देखते हैं क्या आंसर आया है. सॉल्यूशन के बारे में आएगा 1.89. बी इज द आंसर होगा. All the terms of the energy in the Bernoulli equation have the dimensions of लेंथ में है और मीटर में है ना. P by rho g plus B square by 2g plus Z equal to constants. These are in terms of head.
Next question: a vertical circular cylinder is filled with the water, okay, then rotate about its vertical axis at a constant speed such that half the liquid spills out from the open top at the instant. Pressure at the center of the bottom should be. क्या हो रहा है देखो, ऐसा एक सिलेंडर है सर्कुलर, इसमें जो लिक्विड फ्लूइड है रोटेशनल होके ऐसे हो गया कुछ, सो बॉटम में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द आंसर. Next question: if the quantity of the water flowing through a pipeline of 8 centimeter dia is 0.1 meter cube per second and velocity in b, this is the what? This is the discharge q. So we know the formula q equal to, yani discharge equal to area into velocity. Okay, we know the area and the discharge, easily we calculate the velocity. So velocity equal to q by a. q कितना है, 0.1 डिवाइडेड बाय एरिया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर 8 इंटू 10⁻², होल स्क्वायर. क्यू की सेंटीमीटर है, सो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा करेक्ट होगा. मैथ खुद से सॉल्व करना, पेन और पेपर लेके बैठना प्लीज. देखो सॉल्व करने के बाद में आएगा 20 मीटर पर सेकेंड. जैसे मैं बोला, जिस फार्मूला यूज किया, देखो सेम प्रोसेस सेम फार्मूला एंड द आंसर इज कमिंग. क्वाइट सिंपल बट प्रैक्टिस का जरूरत है. प्रैक्टिस करोगे तो और भी इजी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द ओरिफिस CD. ओरिफिस का 0.612 to 0.64, so 0.62 is heaven, so 0.62 is the answer. Okay, next question, the Bernoulli's theorem for the liquid is applicable for. Bernoulli's theorem for the liquid is applicable for. Bernoulli's theorem: viscous fluid, compressible fluid, turbulent fluid flow. No, non-viscous fluid, incompressible fluid and turbulent flow नहीं होगा. ऑप्शन डी इज द आंसर. एजम्पशन से क्वेश्चन है, देख सकते हो. फ्लो क्या क्या एजम्पशन है बर्नौलीज इक्वेशन का. The Bernoulli equation states that the steady flow, the sum of the all forms of the energy of the fluid along a streamline is the same at all points on the streamline. This requires that the sum of the kinetic energy, potential energy, pressure energy remains constant. क्या क्या assumption है? Flow is steady, incompressible, non-viscous, rotational and streamline flow. इसको याद में रखना. In isentropic flow between the 2 points, the stagnation pressure and the stagnation temperature may vary. Pressure would decrease in the direction of the flow. Pressure and the stagnation temperature would decrease with and the increase in the velocity. Pressure, stagnation temperature and the stagnation density would remain constant through the flow. Option D is the correct. Pressure, stagnation temperature and the stagnation density would be remain constant throughout the flow. Next question, consider the following assumption. The assumption: the fluid is compressible, fluid is inviscous, the fluid is incompressible and homogeneous, the fluid is viscous and the compressible. The Euler's equation of the motion requires the assumption. Euler's equation का assumption क्या क्या है? इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, कॉम्प्रेसिबल नहीं. इनविस्कस राइट है. द फ्लो इज इनकॉम्प्रेसिबल एंड होमोजेनियस, यस परफेक्ट. द फ्लूइड इज विस्कस, नो. So 2 and 3 is the correct. Option B is the correct.
The expression P plus rho Gj plus rho V square by 2 commonly used to express Bernoulli equation. This is the energy per unit volume from total energy per unit mass, total energy per unit weight, total energy per unit volume. Option C, total energy per unit volume. देखो जो हम लोग यूज करते हैं, दिस इज द एनर्जी पर यूनिट वेट. ओके, दिस इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Reynolds stress may be defined as the Reynolds stresses normal and the tangential due to the viscosity of the fluid, additional normal stresses due to fluctuation velocity components in a turbulent flow, additional shear stresses due to fluctuation velocity components in a turbulent flow, additional normal and the shear stresses due to fluctuation velocity component in the flow field, additional shear due to the fluctuation velocity components in a turbulent flow. ऑप्शन सी. देखो फ्रेंड्स, ऑलरेडी 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है हम लोगों का. अभी फ्लो थ्रो पाइप में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. ओके, 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुका है. दिस इज द बिग अचीवमेंट ऑफ आवर. ओके, जो कोई भी नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना. और डेली सुबह के 7 बजे का क्लास में आप लोग ज्वाइन होने का भूलना मत. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 774. फॉर द टर्बुलेंट फ्लो थ्रू द पाइप, प्रेशर ड्रॉप इन इज द फ्लक्चुएशन ऑफ exponential velocity square root of velocity cube of the velocity square of the velocity square root of the velocity. टर्बुलेंट फ्लो थ्रू प्रेशर ड्रॉप. प्रेशर ड्रॉप क्या होता है फ्रेंड्स? HF इक्वल टू रो एल वी स्क्वायर बाई रो एल वी स्क्वायर बाई 2GD. एफ मिस हो गया यार, राइटिंग भी नहीं हो रहा है. रो नहीं होगा, एफ एल वी स्क्वायर बाई 2GD. So this is the HF is directly proportional to B square. The power transmitted through a pipe is the maximum when the losses of the head due to the friction is given. फ्रेंड्स, इसको हम प्रूव भी करवा सकते हैं, बट अब लोग चाहोगे तो मैं सेपरेट एक वीडियो प्रूव करके दे दूंगा. ऑप्शन होगा H/3, हेड का 3 टाइम्स. सिंपल फ्रेंड्स, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू रो जी क्यू इंटू भी सम रो जी क्यू HF. ओके, सो HF का मान पुट करना. HF क्या होता है? HF फॉर्मूला जो है हम लोग का HF का, उसको देन DQ बाई DP बाई DF DP बाई DQ इक्वल टू 0 करोगे तो मैक्सिमम पावर आ जाएगा. ओके, जेहेतु हेड डिफरेंस है, सो रो जी क्यू एच माइनस HF करना पड़ेगा, H/3. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जो कोई भी नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डेली सुबह का 7 बजे क्लास में जुड़ना.